Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें नुआ पाठ गोटे स्टार्ट करिबा नानो मटेरियल्स एंड एप्लीकेशन यार फर्स्ट चैप्टर रे हमें नानो स्केल सिस्टम्स रो बेसिक इंट्रोडक्शन विषय रे आज पढ़िबा ओके सो ये जो नानो साइंस बा नानो टेक्नोलॉजी रो वर्तमान डे टू डे लाइफ रे बहुत गुड़ाए इम्पोर्टेंस रोचे रिसर्च या उपरे एबे जाए आहरी चली आउ आमे सपोज गोटे स्मार्टफोन रू नहीं कि गोटे लैपटॉप जोटा आगरू थिला गोटे लैंडलाइन फोन गोटे भारी भरकम कंप्यूटर सेट थिला तो एबे से लैपटॉप रू भी आहरी ताको कनसाइज करके टैबलेट आसी जाइए ओके सो केमती आमे गोटे छोट रू आहरी छोट करके गोटे मटेरियल को आमे यूज करि परिबा सो दैट से आम पई सेम काम करिवो जोटा कि आहरी बड़ साइज रो मटेरियल द्वारा होउथिला ता छड़ा एटा तो केवल मु लैपटॉप बा मोबाइल रो कथा कहली गुड़ाए एमती एप्लिकेशन रोचे ये नानो साइंस आ नानो टेक्नोलॉजी रो ओके ता विषय रे हमें बेसिक नॉलेज आज देखिबा सो एठी ये जो वर्ड नानो ये नानो वर्ड को हमें यूज जो करूछु यार माने हला 10 टू द पावर -9 ओके माने 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ समथिंग सो जमती तुम पढ़ी 1 नानोमीटर ये होची 10 टू द पावर -9 मीटर सिमिलरली 1 नानोग्राम 10 टू द पावर -9 ग्राम 1 नानोसेकेंड 10 टू द पावर -9 सेकेंड ओके आउरी भी अलग अलग फिजिकल यूनिट रे आम या एक्सप्रेस करि परिबा से जहाँ भी हो ये जो नानोमीटर जदि आम देखा लेंथ एटा एक्चुअली गोटे एटॉमिक डायमीटर रो स्केल रे आसुची ओके गोटे एटम रो जो डायमीटर रोची तारी स्केल रे 1 नानोमीटर रोची आ जदि आम 4 रू 5टा एटम साइड बाय साइड प्लेस करके रखिबा देन इट विल मेक 1 नानोमीटर ओके अच्छा सो याकू जदि आम कंपेयर करिबा ओके एज यू कैन सी इन दिस फिगर सो एठी देखो एटा होची गोटे एटम रो चित्र जार एठी डायमीटरटा 0.1 नानोमीटर दउची तापरे एठी रहउची 3 टू 10 नानोमीटर रे CNT बा कार्बन नानो ट्यूब्स ओके सिमिलरली एठी तळे देखो एटा होची 3 नानोमीटर डायमीटर रो गोटे DNA चेन सिमिलरली एठी 10 नानोमीटर रो प्रोटीन अछि देन 35 नानोमीटर रो ट्रांजिस्टर अछि देन रेड ब्लड सेल बा लौह रक्त कोष यार जदि आम देखा डायमीटर अराउंड 6 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर मीन्स 10 टू द पावर -6 मीटर ओके तापरे आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जानिछु सेथिरु जदि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को देखा यार रेंज रोची 400 टू 780 नानोमीटर ओके अच्छा आ गोटे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है तुम जो ह्यूमन हेयर मुंडर जो चुटी तार डायमीटर 100 माइक्रोमीटर रोची आउ गोटे जदि बाली रो कणिका नेबा अति सरू कणिका अ ग्रेन ऑफ सैंड यार साइजटा 10 टू द पावर 5 रू 10 टू द पावर 6 नानोमीटर भितरे रेंज करुची ओके सो दिस इज द रेंज स्केल ओके ऑफ डिफरेंट स्मॉल साइज मटेरियल्स ओके अच्छा सो ये जो नानो साइंस एक्चुअली दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट नानो साइंस होची कोन इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल्स ऑन द नानोमीटर स्केल ओके सेही सेम मटेरियल और स्ट्रक्चर को आमे स्टडी करिबा नानोमीटर स्केल रे माने स्मॉल साइज ओके फॉर नानो साइंस to come into picture at least one dimension of the material or structure should be
lying in the range 1 to 100 nanometer. ओके जे कौन सी गोटे डायमेंशन जदि 3 डायमेंशन रे नौछ ताले जे कौन सी गोटे डायमेंशन टा 1 रु 100 नानोमीटर रेंज भितर रहिबा कथा. ओके now we can also say that nanoscience is the study of phenomenon and manipulation of materials at atomic, molecular and macromolecular scales. Okay, so nanomaterials याको आम डिफाइन करिपरिबा एज दोज materials which have structured components having size less than 100 nanometer in at least one dimension. Okay, and the smallest structures that human can produce is having obviously dimension of few nanometer. काईकि because आमे already देखिला जे atom रो जो diameter सेटा रहउची गोटे नानोमीटर रे तेणु ह्यूमन मनीष जोटा निजे आर्टिफिशियली क्रिएट करिपारिबो सबुठु छोट स्ट्रक्चर ओके तार साइजटा भी सेही नानोमीटर डायमेंशन रे ही रहिबो. ओके सो एई नानोमीटर रेंज रे आमे स्ट्रक्चर छोट स्ट्रक्चर स्मॉल टू स्मॉल छोट स्ट्रक्चर तैयारी करिपारिबा. ओके एंड दे कैन टेक ऑन इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज. ओके इन द नानो रिजिम माने एटा होची गुटे ऑर्डर रे थिबा अरेंजमेंट बा सिस्टम. ओके सो इन द नानो रिजिम देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू देयर बल्क काउंटरपार्ट्स. ओके बड़ साइज रे जो मटेरियल टा थिला सेतेबेले जो प्रॉपर्टी देखौतिला जेतेबेले आमे नानो रिजिम को पळेबा आहुरी छोटो कर देबा ताले तार प्रॉपर्टीज टा देखा जाउची पूरा चेंज हे जाउची. ओके फॉर एग्जांपल एठी देखो कहूची जे सपोज आमे गोटे सॉलिड नेला ओके ताले सेटा लिक्विड हे जिवो एट रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल गोल्ड. सिमिलरली गोटे इन्सुलेटर विल बिकम ए कंडक्टर एग्जांपल सिलिकॉन केतेबेले ना जेतेबेले आमे नानो रिजिम को जाउचु राइट. नाउ इनर्ट मटेरियल्स जदि देखिबा इट विल बिकम कैटलिस्ट एग्जांपल प्लैटिनम. सिमिलरली स्टेबल मटेरियल्स कैन बिकम कंबसिबल एग्जांपल हला एल्युमिनियम. तापरे ओपेक सब्सटेंसेस जो थ्रू की लाइट पास करि पारे नाही नाउ दे बिकम ट्रांसपेरेंट लाइट एबे पास करिवो एटा हला एग्जांपल कॉपर. ओके सो एटा पूरा पूरी कॉन्ट्राडिक्शन आछि तार प्रॉपर्टीज को पूरा पूरी चेंज कर दोछि जेतेबेले हमें नानो रिजम अति छोटो साइज को सेम मटेरियल रो जाउछु. ओके सो when none of the dimension of the structures or materials is comparable with the de Broglie wavelength of electron or exciton Bohr radius for it, then आमे सही मटेरियल बा स्ट्रक्चर को बल्क बोली की कहिबा. ओके फॉर एग्जांपल गोटे पिकॉक फेदर बा मयूर पुच्छ जो अच्छी किंबा सोप बबल ओके साबुन पानी रे जो बबल क्रिएट हुए. ओके सो आमे देखू सेटा जेतेबेले ता ऊपर लाइट पड़े बहुत ब्यूटीफुल कलर पैटर्न एथिरे देखा जाए. ओके सेही जो कलर पैटर्न टा आसुची ताको आमे कहिबा इरिडिसेंट कलरेशन. ओके केमती ए जिनसटा होची ना लाइट इंटरैक्ट करूची विथ द स्ट्रक्चर which are having thickness of tens of nanometer. ओके सही 10 नानोमीटर रेंज रे सही स्ट्रक्चर रो थिकनेस टा रहउची. मयूर पुच्छ को भी जदि देखिबो पाखरु सेतिरे बहुत छोटो 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 बारीक पूरा धागा भलिया थाए. ओके सो सेही थिरे जेतोले लाइट टा इंसिडेंट होउची सो ताको ये इरिडिसेंट कलरेशन करूची सो दैट मल्टीपल सेही भलिया कलरेशन हे कि हमको कलर रो गुटे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखा जाए. ओके सेही भलिया हमको सेटा बहुत बहुत माने सुंदर देखा जाए. Now many such examples may be quoted here to show the change of properties when size is reduced and brought to your nanometer regime. Okay acha now let us see what is nanostructure. Nanostructure mane kono it can be formed on solid surface such as metals, semiconductors like your silicon and carbon based materials like CNT. CNT mane carbon nanotube or graphene or diamond as well as liquids. Now specialized method or technique ame एथिपाई दरकार करिबा in order to create these nano structures and in order to observe and study these nano structure हमको specialized equipment दरकार. Okay
Now nano science ro principle जो अच्छी these are now being used by scientists and engineers from several disciplines. ओके बहुत गुड़ा एप्लिकेशन यार रोचे जमती कि फिजिक्स रे केमिस्ट्री रे बायोलॉजी रे मटेरियल साइंस रे ओके आउ एई एडवांस एप्लिकेशन को आमे नहीं कि एनर्जी मेडिसिन कंप्यूटिंग मेमोरी फॉर इनफॉरमेशन स्टोरेज एठी आमे यूज करि परिबा ओके आ एई नानो साइंस होची गुटे बहुत emerging area of science and technology आजिर माने दिन रे okay and it is not only confined to a limited region rather it is a diverse field okay बहुत गुड़ाए multiple wide application यार रोचे ये जो नानो साइंस रो ओके अच्छा ये जो नानो स्केल सिस्टम को एक्चुअली आमे डिस्क्राइब करबा पई यूज करबा क्वांटम मैकेनिक्स ओके सो क्वांटम मैकेनिक्स आमे जानिछु एटा भी छोटो पार्टिकल ऊपर एटा एप्लीकेबल ओके सो क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करिकी आमे नानो स्केल सिस्टम को डिस्क्राइब करि परिबा नाउ द यूजुअल electrical optical and magnetic and mechanical properties which are shown by the nanomaterials that can also be explained on the basis of this quantum physics okay now let us see what is nanotechnology एटा बहुत तमे एक्वेंटेड टर्म गुटे नानो टेक्नोलॉजी विषय रे सुनी थिबो सो यार डेफिनेशन जदि आमे देखिबा NNI NNI माने नेशनल नानो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से या को डिफाइन कला जे नानो टेक्नोलॉजी इज द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर with at least one dimension lying in the range 1 to 100 nanometers. In other words, nanotechnology is the design, characterization, production and application of structures, devices and system on nanoscale. Okay, जे कौनसी structure डिवाइस बा मेशिन किंबा सिस्टम जोटा नानो स्केल रे थिबो तार प्रोडक्शन आउ एप्लीकेशन को आमे नानो टेक्नोलॉजी बोली कि कहिबा आउ गोटे अल्टरनेट डेफिनेशन कोन इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन एन एटॉमिक मॉलिक्यूलर और सुप्रामोलिकुलर scale. So this nanotechnology includes within its realm all types of research and technology that deal with the special properties of matter which occur below a given critical size or limit okay गोटे particular critical size बा limit रे जो material occur करूची exist करूची ताकू नहीं कि आमे नानो टेक्नोलॉजी रे यूज करि परिबा okay and this nanotechnology actually deals with both natural and artificial structure okay artificial means man made human made on nanometer scale केवल structure टा nanometer scale रे रहिबा कथा okay आउ एटा होची गुटे टेक्नोलॉजी which is capable of manipulating एठी जो manipulating वर्ड टा बारंबार आउची माने आमे आमो हिसाब रे ताकू स्ट्रक्चरिंग करिबा राइट सो दिस इज योर मैनिपुलेशन so manipulating even single atoms or molecules we can design the structure so various fields of science such as surface science organic chemistry molecular biology semiconductor physics then micro fabrication molecular engineering etc all these come under the umbrella of this nanotechnology or nanoscale technology okay basically जदि आमे देखिबा जे nanotechnology माने कोन इटा होची engineering of tiny machines with the projected ability to build things from bottom to up okay so using techniques and tools which are developed today we can make complete highly advanced products okay so यार आमे जदि एप्लिकेशन देखिबा ए नानो टेक्नोलॉजी रो गुडा एमती एप्लिकेशन रहउची जोटा कि कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स रो इजी सॉल्यूशन बा आंसर दे पारुची इन ऑल फील्ड्स ऑफ वर्क सपोज फॉर एग्जांपल आमे एक्सपेक्ट करिबा जे in the products like tennis rackets self cleaning cars paint food cosmetics then
थर्माल अंडरवेयर यही जगार भी नानो टेक्नोलोजी को आम यूज करिपरिबा। ओके, सो या चिंता करा जाउची जे गोटे दिन एमती आसीबो जे नानो टेक्नोलोजी विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू ऑल द ह्यूमन प्रॉब्लम्स, whether it may be your hunger which are in developing countries, then pollution which are in developed nation। pollution गुड़ाए प्रकार अच्छी, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सो तार भी ये सॉल्यूशन देई पारिबो। ओके, सो सबू जेते प्रकार मेजर प्रॉब्लम रोची तार आंसर नानो टेक्नोलॉजी रो मिली पारिबो बोली एटा गुटे एबे बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करा जाउची। ओके, so nanotechnology may be able to create many new materials and devices with a vast range of application। okay, example nano medicine अच्छी, nano electronics अच्छी, then biomaterial, energy production, cosmetics। आउ जदि आमे यार गोटे कोड देखिबा एई नानो टेक्नोलॉजी रो फ्रॉम स्मॉल वंडर्स एंडलेस फ्रंटियर्स, सो एई कोडटा एई भଳି अछि with potential application in virtually every existing industry and new application yet to be discovered। Nanoscale science and technology will no doubt emerge as one of the major drivers of economic growth। माने रखो नानो टेक्नोलॉजी जेते डेवलप करिवो इकोनॉमिक ग्रोथ भी सेते स्ट्रेंथन हेबो इन द कंट्रीज। सो इन द फर्स्ट पार्ट एंड of the new millennium। ओके, सो आमर जो मिलेनियम रो स्टार्टिंग रू ए नानो टेक्नोलॉजी रो एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होइछि। सो नानो टेक्नोलॉजी रो एग्जिस्टेंस जदि देखिबा एक्चुअली इट इज वेरी एस्टोनिशिंग और सरप्राइजिंग यार डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स। माइक्रो कहले एठी हमें 10 टू द पावर -6 को बुझिबा, नानो टेक्नोलॉजी आगु माइक्रो टेक्नोलॉजी और माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स थिला। okay, so it has developed at a fast pace due to the invention of many observational and characterizing tools, particularly रहुछि जदि एग्जांपल स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोप याको आमे कहबा STM, तापर आ गुटे अछि AFM which is atomic force microscope। and there are two basic approaches used in nanotechnology। गोटे हला टॉप डाउन आ गोटे है बॉटम अप। टॉप डाउन माने आमे गोटे बड़ जिनसटा को सपोज खंड खंड करिकी छोटरे पहुँचवा सेटा होची टॉप डाउन। आ बॉटम अप माने उल्टा छोट जिनस आमे बिगर थिंग्स क्रिएट करवा, राइट। सो कन्वेंशनल माइक्रो टेक्नोलॉजी जोटा नानो टेक्नोलॉजी रो पूर्वरु थिला सेटा टॉप डाउन टेक्नोलॉजी थिला। okay, in which the microstructures are fabricated means they are designed artificially by manipulating a large piece of material, typically a single crystal of silicon, using the processes such as lithography, etching and metallization etc। so top down method रे कौन हुए जेमती कहली नानो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर लार्ज इंस्टॉलेशन एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, एथिपाई बहुत अर्थ भी दरकार ही थाए। सो दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड। ओके, सो एथिपाई बहुत मनी रो इन्वेस्टमेंट दरकार करथाए ए जो टॉप डाउन मेथड। हाउएवर जते बेले इन्वेंशन आसिला एडवांस इंस्ट्रूमेंट रो सचेज ऊपर जो आमे देखिला तुमरो जो स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोप STM आउ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप your AFM for observation and manipulation of individual atoms and molecules। now they have led to a new approach to the technology जोटा है bottom up approach। top down ru ebe ulti gala bottom up। so bottom up रे कौन हेबो ना in this method instead of making small structures out of large structures आमे उल्टा जिनस करबा द स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर मेड नाउ डायरेक्टली। ओके, केमती डायरेक्टली आमे या करि परिबा ना जते बेले आमे मॉलिक्यूल आ एटम बिकॉज सब जिनस मॉलिक्यूल और एटम रे ही तयारी। सो याको आमे ठीक भाव रे जदी असेंबल करिकी सही स्मॉल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली जदी तयारी कर देला देन इट विल बी ए बॉटम अप approach। okay, and this bottom up approach of synthesis of nanostructure is supposed to work within all living system। okay, because
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ रे प्रथमे जीवर उत्पत्ति हेतिला आमे जानिछु सेटा गोटे छोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थिला जदि साइंस हिसाब रे आमे विचार करिबा ताले सेठरू पुनी डेवलपमेंट हेकी मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्रिएट हैला आज आम मनीष अवस्था भी पहुँचीचु सो बॉटम अप अप्रोच हिसाब रे आमे ताकू कंसीडर करि परिबा एंड दिस बॉटम अप अप्रोच डज नॉट रिक्वायर लार्ज इंस्टॉलेशन which is to be put up and hence it is cost effective ओके जोटा टॉप डाउन मेथड रे बेसी अर्थर भी दरकार होतला बॉटम अप अप्रोच रे कॉस्ट भी पूरा पूरी कमी गला ओके now as any other new technology nanotechnology also raises some serious concerns about your social economical environmental and military implications okay so this means आमे जेकोसी गोटे नुआ टेक्नोलोजी को जिते यूज करुचु आमे जानिछु तार किछिटा प्लस पॉइंट्स भी रोचे किछिटा माइनस पॉइंट्स भी रोचे इट हैज सम प्रोज एंड कॉन्स तो नानो टेक्नोलोजी रे भी सही बढ़िया जदि आमे देखिबा इट इज सपोज टू रिलीज सम टॉक्सिक वेस्टेज ओके किछिटा विषाक्त पदार्थ एथरू बाहरुची जोटा कि से एनवायरनमेंट को छाड़ुची सो इट मे हैव सम पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स ता छड़ा इट मे अफेक्ट बैडली ऑन द ह्यूमन हेल्थ ओके सो फॉर एग्जांपल जमती कि आगो घर मानक उपरे जो रूफ रे एजबेस्टस गोटे दिया जाउथला ओके सो एई एजबेस्टस रे जो फाइबर रहउची ताकू बहुत वर्ष पर्यंत यूज करा जाउथला बिफोर एनीवन कुड रियलाइज दैट एक्चुअली यार हेल्थ हाजार्ड रोचे जोटा कि ह्यूमन बॉडी उपरे तार बहुत ही बैड इफेक्ट पकाउची ओके से भाया नानो टेक्नोलोजी भी किछिटा नेगेटिव पॉइंट्स रोचे तेबे से जहाँ भी हो आमे मोटामोटी जदि कहबा जे नानो टेक्नोलोजी होउची इज द टेक्नोलोजी ऑफ डिजाइनिंग एंड मेकिंग फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स एट द नानो स्केल एंड the science which is underlying the nanotechnology is called nanoscience okay now let us see the size dependence of properties which are nanomaterials so the nanomaterial कहले actually these are lying in a physical size regime between the bulk macroscopic material and molecular compounds याको आमे क्लासिफाई करिबा जदि ई सॉलिड को तीनटा वे रे गोटे हला amorphous or glass like where no long range order exists second one polycrystalline where it is having multiple domains and here short range order exists then the third one is crystalline where long range order is existing and there is also periodicity okay so much of the nanoscience and nanotechnology are actually focusing on nanometer sized crystalline solids okay now with the reduction in size जेतेबेले साइजटा कमी जाउची गोटे मटेरियल रो आउ स्टैटिस्टिकल मेकानिकल जदि आमे इफेक्ट देखिबा ता सहित क्वांटम मेकानिकल इफेक्ट एटा गोटे मेजर इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची ओके सो जेतेबेले मटेरियल टा नानो रिजिम को पहुंची जाउची माने तार साइजटा नानो रिजिम माने 1 रु 100 नानोमीटर पर्यंत तार साइजटा जेतेबेले रहुची देन जे कोनसी गोटे डायमेंशन देन क्वांटम साइज इफेक्ट ओके क्वांटम साइज इफेक्ट बोली गोटे जिनस जोटा लीड करूची कौन लीड करूची ना ये गोटे चेंज कर दउची ओके इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ दोज सॉलिड्स ओके आ यह छड़ा जेतेबेले आमे गोटे मटेरियल रो नानो रिजिम बा क्वांटम रियल्म को पहुंचुचु तार मेकानिकल इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मध्य चेंज हो जाउची आउ ए जो चेंज गुडारू सबुठु इंपोर्टेंट notable change है increase in surface area to volume ratio that is S by V ratio for nanomaterials over the bulk so ए जो S by V ratio रो increase हेबा द्वारा कौन होची ए मेकानिकल और थर्मल और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल रो चेंज होची ओके काहे कि एमती इंक्रीज होची बिकॉज आमे जेतेबेले नानोमीटर साइज रे पहुंचुचु गोटे सिस्टम रो ताले प्राय अधा बा 50% एटम्स एक्चुअली से नानो स्ट्रक्चर रो सरफेस रे रही जाउछंती ओके नाउ द सरफेस इज देयरफॉर पोटेंशियली इंपोर्टेंट इन डिक्टेटिंग द मटेरियल्स ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज व्हेन
we have reached the nanometer size. Okay, so the increase in surface area is important in application where S by V ratio, that is your surface area to volume ratio, is playing a very critical role, such as in catalysis by Mondoko, as well as photovoltaics, where light is converted into voltage or electricity. Okay, however ये जो catalytic activity जदि आमे देखिबा नानो मटेरियल रो यार गोटे पोटेंशियल रिस्क मध्य रोची इन देयर इंटरेक्शन विथ द बायो मटेरियल। ओके, अच्छा तापरे बल्क मटेरियल जदि आमे देखिबा जनरली एक्जिबिट कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, व्हेरेज नानो स्केल मटेरियल जदि देखिबा तांकर कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन रोनी, रादर डिस्क्रीट ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा रोची। ओके, सो এটা পুরা চেঞ্জ দেখাইলা। সম অফ দ চেঞ্জেস ইন প্রপর্টিজ অফ মেটেরিয়াল ওপন গোইং ফ্রম বল্ক টু নানো সাইজ, যেমতি আমি আগুরু भी পড়িলা, লাইক ওপেক টু ट्रांसपेरेंट in case of copper, stable to combustible in case of aluminum, insoluble to soluble in case of gold, then inert to catalyst in case of gold. Okay, other notable changes ଯେମିତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇଜ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ପାର୍ଟିକଲ୍ର, ଲାଇକ୍ your increase in surface energy, then decrease in melting point, increase in chemical reactivities, then change in optical band gap, etc. Okay, thus much of the nanotechnology actually involves these quantum and surface phenomena that matter manifest at the nanoscale. Okay, अच्छा एतकी जानला ପରେ ଏବେ ଭେରିୟସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ପୁରା ଡାଇଭର୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ୟାର ୟୁଜ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବେଟର ୱେରେ କରିପାରୁଛୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର। ଓକେ, ସୋ there are devices that have emerged out of nanotechnology and they show the existence of new functionalities in them. Okay, so improvement এই ভଳିଆ ଗୋଟେ continuous process ରେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର। ଓକେ, ସୋ ଆଗ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବିଗର ସାଇଜ୍ରେ ଥିଲା। ସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଏଇ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ତା ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ট্যাবলেট ବି ଅଛି। ସୋ ସାଇଜ୍ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଏବେ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଓକେ, ସୋ not only these electronic devices like your laptop and mobiles, also we have TV, air conditioner, refrigerator, ଏଠିରେ ବି ତମର ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ଆଉ ନାନୋ ସ୍କେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଯାହାର ଆମେ डायमेंशन ଜାଣୁଛୁ କେତେ ନା 1 to 100 nanometer. So these have potential to show unique properties and new functionalities. Okay, so nanotechnology को यूज करिकी आमे एई भलिया इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस यूज करि परिबा, डेवलप करि परिबा। सो कोन तार बेनिफिट हला देखो, हमर एठी वेट रिडक्शन आसी जाउची। ओके, तार माने जो जेते भारी थिला एबे हल्का ही गला से जो डिवाइसटा, तापरे पावर कंजम्पशन कमी गला। ओके, सो दैट एनर्जी कंजम्पशन कमी गला, से हिसाब रे तमरो अर्थ खर्च भी कमी जिवो। ओके, नाउ लो एनर्जी consumption flat panel displays or your computer monitors using the carbon nanotubes and your silicon nanowires, these are also possible for manufacture due to your nanotechnology. Okay, तापरे nanowires अच्छी, then small molecules जोटा they may be used in computers. Okay, आ गोटे फील्ड होची स्पिंट्रोनिक्स। स्पिंट्रोनिक्स माने स्पिन बेस्ड इलेक्ट्रोनिक्स, जोटा कि गोटे नानो टेक्नोलोजी रो ब्रांच which is expected to greatly improve the storage capacity of memory। जे कौनसी डाटा को आमे स्टोर करिकी तार मेमोरी रे रखिबा पई गोटे स्टोरेज कैपेसिटी रहिबा दरकार से जो डिवाइस रो। सो ताकू आहुरी इम्प्रूवमेंट करिबा पई स्पिंट्रोनिक्स आमे यूज करि परिबा बाय एप्लीकेशन ऑफ योर नानो टेक्नोलोजी।
ओके जोटा हार्ड डिस्क स्टोरेज को बढ़ाई देव ओके आउ रैम रो भी स्टोरेज को बढ़ाई देव रैम माने एठी रैंडम एक्सेस मेमोरी ता सहित गोटे अच्छी तुम ये एम रैम माने मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जोटा ऑलरेडी कमर्शियलाइजेशन यार हो सारी विथ ए ग्रेट स्टोरेज कैपेसिटी ता सहित अच्छी जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस GMR एंड TMR माने टनल मैग्नेटो रेजिस्टेंस ओके सो these two effects can be used to create non volatile main memory of your computers ओके सो ये है कंप्यूटर कथा जदि आउरी भीतर को जीवा ताले क्वांटम कंप्यूटर which is based on qubits and using the fast quantum algorithms so these are expected to do billions of computation in parallel making them many times faster than the powerful your present supercomputer एबे जो सुपर कंप्यूटर रू भी आहरी जल्दी आम रिजल्ट को कैलकुलेट करिपरिबा बाय यूजिंग दीज क्वांटम कंप्यूटर्स नाउ स्पिन बेस्ड डिवाइसेस सच एज फेट माने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर देन स्पिन एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड देन एनकोडर्स अच्छी डिकोडर अच्छी ताकू भी आम यूज करिपरिबा इन कंप्यूटर एंड दीज आर बीइंग डेवलप्ड सो नानो टेक्नोलोजी रो बहुत ही ग्रेटर पोटेंशियल रोची इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फास्टर cheaper compact and more efficient electronic devices as compared to the conventional electronic devices okay then second application जदि आमे देखिबा नानो टेक्नोलॉजी रो दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट वन मेडिकल फील्ड रे देखो नानो टेक्नोलोजी को यूज करिकी आमे टार्गेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम करि परिबा बाय यूजिंग नानो पार्टिकल टार्गेटेड ड्रग माने कोन सपोज कैंसर रे कोन हुए सेल गुड़ा जोटा रोगग्रस्त थांती जदि आमे जो मेडिसिन बा ड्रग यूज करूछु पार्टिकुलरली से डिजीज सेल उपरे ही डिलीवरी करि परिबा टार्गेट करिकी ओके बाय मीन्स ऑफ योर समान जितकी दरकार जितकी राइट अमाउंट ऑफ ड्रग रोची हीट रोची आउ लाइट रोची देन इट इज टार्गेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम सो दैट केवल से कैंसरस सेल उपरे ही तार कामटा करिवो and at the same time it will reduce the possibility of damaging the healthy cells because जो पेशेंट को कैंसर होता है से पेशेंट रो ट्रीटमेंट पाई आमे जानिछु केमोथेरेपी यूज हुए सो केमोथेरेपी रे कोन हुए बहुत गुडा हेल्दी सेल्स रो भी ऊपर डैमेज आसी थाए सो आमे जदि ए नानो टेक्नोलॉजी यूज करि परिबा ताले केवल से कैंसर सेल ऊपर ही आमे से ड्रग को अप्लाई करि परिबा ओके ता छोड़ा देखो नानो रोबोट्स रो भी आमे यूज करि परिबा फॉर मेकिंग रिपेयर्स ऑफ human cells at the cellular level okay so biomolecules out rochi which can be used as medical diagnosis tool for your nanotechnology research okay then application number 3 eta hochi optics au opto electronics means optics plus electronics so nanotechnology एई फील्ड रे भी यार बहुत गुड़ा स्कोप रोची सो आम एठी कौन करूँ देख लाइट एमिटिंग डायोड आजिकली तुम देखुव घरे घरे लाइट एमिटिंग डायोड बा एलईडी बल्ब लगुच आगु जो बल्ब थिला एई जो फिलामेंट रो बल्बटा थिला जोटा प्राय 100 वाट और 200 वाट थिला सो सेटा आउ प्राय देखा मिलूनी कहीं बिकज एई जो फिलामेंट बल्ब जोटा आगु आम कन्वेंशनल बल्ब थिला से लाइट सहित बहुत हिट भी प्रोड्यूस होता जोटा कि एनर्जी लॉस करथिला किंतु एलईडी बल्ब रे आमे जदि देखिबा एनर्जी लॉस बहुत कम रोची सो कंपैरेटिवली 100 वाट बल्ब जति की लाइट दउची गोटे 6 वाट रो एलईडी बल्ब ताठू बेटर लाइट दउची सो वी कैन से it has more efficiency in production of light and also it has greater life cycle এই जो एलईडी को आमे डिजाइन करि परिबा फ्रॉम इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइसेस which can be constructed out of nanowire materials ओके ता छड़ा क्वांटम डॉट एटी डॉट कहले आमे गोटे पॉइंट को बुझिबा या विषय डिटेल आमे आपको पढ़िबा यार बहुत इंपोर्टेंस अछि क्वांटम डॉट रो सिमिलरली क्वांटम वायर रो भी सो ए डॉट होची गोटे जीरो डायमेंशन रो पार्टिकल बा मटेरियल सो क्वांटम डॉट मटेरियल को आमे यूज करि परिबा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी कलर लेजर्स यार विशेषत्व है दीज आर चीपर ओके यार कॉस्ट बहुत कम रही था एंड दे कैन गिव हायर बीम क्वालिटी सो इन दिस वे आमे देखिला
जे नानो टेक्नोलोजी को आम ऑप्टो इलेक्ट्रोनिक्स रे यूज करिपरिबा फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। नाउ फोर्थ यूज जदि देखा हूँ एनर्जी एनर्जी क्राइसिस आजिकल दुनिया रे बहुत जगह रोचे। नानो टेक्नोलोजी को यूज करिकी आमे ऑलरेडी यार सॉल्यूशन पाई सारिचु फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यार बेस्ट एग्जांपल है जदि आमे देखिबा नानो मटेरियल को यूज करिकी आमे चीपर आ एफिशिएंट सोलार सेल्स। ओके आमे जानिचु सूर्य होची सकल शक्तिर आधार। सो यही सोलार सेल आमे डिजाइन करि परिबा आउ they can be efficient for this energy production. Okay, and they are being developed and commercialized due to this nanotechnology research. आउ ता छड़ा again quantum dot materials यार गोटे विशेषत्व है that they are tunable, size dependent, and absorption and emission spectra are being used in fabricating these efficient solar cells which can operate even under cloudy condition. ओके जदि भी सूर्य देखा जाऊनी ओके सपोज क्लाउड गुड़ा ढांकी देछि फिर भी आमे सेही सोलार सेल को यूज करि परिबा। ऑल्सो दे कैन बी यूज्ड इन रेनी डेज व्हेन कन्वेंशनल सोलार सेल को जदि देखिबा दे आर अनेबल टू ऑपरेट किंतु ए क्वांटम डॉट मटेरियल यूज करिकी आमे याकू डेवलप करि परिबा आहुरी सो दैट एई भलिया परिस्थिति रे क्लाउडी कंडीशन रेनी टाइम रे भी आमे यूज करि परिबा। एंड दीज सोलार सेल्स at the same time will be cheaper due to involvement of low temperature process. Okay, because conventional solar cell ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର direct sunlight ଦରକାର so that temperature high ରହୁଛି। so comparatively यार cost कमी जाଉଛି। अच्छा now in future due to this nanotechnology the energy requirement of the world may be fulfilled easily in a cost effective manner. Okay, then फिफ्थ यूज जदि देखा यहाँ हूँ सेंसर। सेंसर आजिकल बहुत जगार यूज होमती तुम गोटे शॉपिंग मॉल को गल से बाटरे गोटे सेंसर भाया गोटे कबाट भाया थाए जो थे कि मेटल सेंसर सपोज फॉर एग्जांपल तुम कौन रखीच कौन नहीं मेटल सेंसर से इजीली डिटेक्ट कर दिए। सो नानो वेयर मटेरियल्स को आम यूज कर फॉर एफिशिएंट सेंसर डिजाइनिंग इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ओके केवल जे मेटल सेंसर बोली नहीं बहुत गुड़ाए जिनसर आम सेंसिंग करें। गोटे एग्जांपल ये है टॉक्सिक वेस्ट। सिमिलरली केमिकल वेपन को आम सेंस करें एक्सप्लोसिव मटेरियल को आम सेंस करें। सो द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स make a significant change in the electrical properties of these sensing elements. So some of the detecting or sensing elements जोटा यूज करा हुए for the purpose of sensor है your carbon nanotubes. This is a very important field. Okay या विषय भी आपको अच्छी डिटेल पढ़िबा। सो कार्बन नानो ट्यूब बा CNT तापर रोची ZNO बा जिंक ऑक्साइड नानोवेयर्स देन पैलेडियम नानो पार्टिकल्स। सो या यही सब जिनस यूज हुए इन योर सेंसर डिजाइनिंग। thus nanotechnology based on this sensor will be more sensitive and more effective in doing their job. then sixth यूज आम जदि देखा यहाँ हूँ fuel cells। नानो टेक्नोलोजी को बेस करी आम fuel cell रो डिजाइन करि परिबा which are expected to be more efficient than the conventional one in their working as well as they are cheaper। कहीं बिकज एटी जो आम कैटालिस्ट यूज करवा तार कॉस्ट बहुत कम रहिबो। ओके सो मोटामोटी कहवाकू गले नानो टेक्नोलोजी जेतेबेले आम यूज करूँ दुईटा से लाभ होउछि। प्रथम है से एफिशिएंसी को बढ़ाऊँगी सेकेंड है कॉस्ट को कमाऊँगी। ओके देन सेवेंथ यूज होउछि फूड रे भी आम केमती यूज करवा देख नानो टेक्नोलोजी को आम एठी यूज करि परिबा फॉर डेवलपिंग न्यू मटेरियल्स। ओके ये जो न्यू मटेरियल्स कौन करेंगे दे विल चेंज द टेस्ट ऑफ फूड। ओके एंड ऑल्सो दे विल बी यूज्ड फॉर फूड सेफ्टी एंड हेल्थ बेनिफिट्स गिवन बाय द फूड। ओके सो दैट खाद्य प्रक्रियाकरण जो अच्छी से हिसाब रे आमे ऑल्सो ये तो अल्प लिखाई ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट जे कौ खाद्यटा सपोज खाइबा योग्य आउ हेनी कि कौ खाद्य रे किछि विषाक्त जिनस अच्छी ताकू भी आमे डिटेक्ट करि परिबा। ओके तापर देख एट्थ यूज होउछि बैटरीज। ओके आजिकल ये बैटरी कथा कहले आमे जनरली जो स्मार्टफोन बा लैपटॉप रे जो बैटरी आमे यूज करूछु सेटा होउछि रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज जोटा कि आमे नानो टेक्नोलोजी
को यूज करिकी तार डेवलपमेंट करा जाइछि। ओके, सो तार गोटे बेनिफिट है कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी अपेक्षा तार एठी एफिशिएंसी बेसी रोचे अगेन। ओके, दे आर मोर पावरफुल देन द कन्वेंशनल वन। ओके, देन नाइन्थ यूज होची वाटर एंड एनवायरनमेंट। देखो नानो टेक्नोलॉजी एक्चुअली आम जब देखा इट कैन एंड इट कैन प्रोवाइड अस क्लीनर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, जो पानी आजिकल तुम देखुच पानी जिते भी आम पीऊचु जो पीवा योग्य पानी आजिकल बहुत प्रदूषण जो पानी कोई ना। देन सिक्स्थ यूज आम जब देखा यहाँ हूँ फुएल सेल्स। नानो टेक्नोलॉजी को बेस करी आम फुएल सेल रो डिजाइन करि परिबा which are expected to be more efficient than the conventional one in their working as well as they are cheaper। कहीं बिकज एटी जो आम कैटालिस्ट यूज करवा तार कॉस्ट बहुत कम रहिबो। ओके, सो मोटा मोटी कहबाकू गले नानो टेक्नोलॉजी जेतेबेले आम यूज करूछु दुईटा से लाभ होउछि। प्रथम है से एफिशिएंसी को बढ़ाऊँगी, सेकेंड है कॉस्ट को कमाऊँगी। ओके, देन सेवेन्थ यूज होची फूड रे भी आम केमती यूज करवा। देख नानो टेक्नोलॉजी को आम एठी यूज करि परिबा फॉर डेवलपिंग न्यू मटेरियल्स। ओके, ये जो न्यू मटेरियल्स कौन करेंगे दे विल चेंज द टेस्ट ऑफ फूड। ओके, एंड ऑल्सो दे विल बी यूज्ड फॉर फूड सेफ्टी एंड हेल्थ बेनिफिट्स गिवन बाय द फूड। ओके, सो दैट खाद्य प्रक्रियाकरण जो अच्छी से हिसाब से आम ऑल्सो ये तो अल्प लिखाई ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट जे कौ खाद्यटा सपोज खाइबा योग्य आउ हैनी कि कौ खाद्य किसी विषाक्त जिनस अच्छी ताकू भी आम डिटेक्ट करि परिबा। ओके, तापर देख एट्थ यूज होची बैटरीज। ओके, आजिकल ये बैटरी कथा कहले आम जनरली जो स्मार्टफोन बा लैपटॉप रे जो बैटरी आम यूज करूचु सेटा होची रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज जोटा कि आम नानो टेक्नोलॉजी को यूज करिकी तार डेवलपमेंट करा जाइछि। ओके, सो तार गोटे बेनिफिट है कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी अपेक्षा तार एठी एफिशिएंसी बेसी रोचे अगेन। ओके, दे आर मोर पावरफुल देन द कन्वेंशनल वन। ओके, देन नाइन्थ पॉइंट रे आमे वाटर आउ एनवायरनमेंट रो ट्रीटमेंट मध्य करि परिबा बाय यूजिंग दिस नानो टेक्नोलॉजी। देखो आम पई गोटे मूल आवश्यकता होची क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आजिकली वाटर पोल्यूशन सबु जगह रे, सो बाय means of this nanotechnology we can remove the industrial waste which are present inside the water। so केमती एटा हे परिबो this can be accomplished by chemical reaction which can convert the contaminants present in the water into less harmful or better we can say harmless substances in a cost effective way। so nanotechnology रो जदि आमे देखिथिला जेमती सेंसिंग आउ डिटेक्शन, सो ये जो पोल्यूटेंट्स गुड़ा अच्छी वाटर रे प्रेजेंट अच्छी ताकू ये डिटेक्ट करि परिबो। ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड रेमेडिएशन ऑफ दीज कंटामिनेंट्स एंड ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। सो एथिपाई आमे गोटे पार्टिकुलर स्पेशल मटेरियल यूज करबा डेंड्रीमर व्हिच इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, सो एई मटेरियल को यूज करिकी पार्टिकुलरली आमे एई जो वाटर ट्रीटमेंट करि परिबा। ओके, तापरे एनवायरनमेंट कथा जदि देखिबा सो परिवेश प्रदूषण भी ताकू भी आमे कंट्रोल करि परिबा बाय यूजिंग दिस नानो टेक्नोलॉजी। इट मे रिजल्ट इनटू इम्प्रूव्ड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, significantly reduction of environmental impacts due to the use of cleaner manufacturing practices। ओके, जेते आमे प्रदूषण जो अच्छी ताकू आमे मैनेज करि परिबा इन ए प्रॉपर वे बाय यूजिंग दिस नानो टेक्नोलॉजी, से हिसाब रे आमे गोटे फ्यूचर रे बेटर वर्ल्ड क्रिएट करि परिबा। राइट, अच्छा, सो एते सब जो आमे वेरियस फील्ड देखिला वेरियस यूज देखिला नानो टेक्नोलॉजी रो ताकू छाड़ी देले बिसाइड्स अबव मेंशन्ड एरियाज इम्पैक्ट जदि देखिबा नानो टेक्नोलॉजी रो इट हैज एक्चुअली various application in many fields which might benefit from this great revolution which is this nanotechnology जोटा कि 21st सेंचुरी रो गोटे रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी। ओके, सो ये जो नानो टेक्नोलॉजी एक्चुअली ताकू जदि आमे कंपेयर करिबा
सपोज जमती आमर बाष्प चालित इंजिन स्टीम इंजिन इन्वेंशन होता किंबा इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंशन होता किंबा गोटे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आसला ओके आउ इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन होता यही सब जिनस पास्ट सेंचुरी आम देखीचु ताठू भी ग्रेटर इंपोर्टेंस रखुची यही नानो टेक्नोलोजी ओके सो यार फ्यूचर रे बहुत स्कोप अच्छी सो आपको आम डिटेल ये नानो टेक्नोलोजी रिलेटेड विषय रे जोटा तुम सिलेबस रे अच्छी 1 by 1 पढ़ा ओके थैंक यू।